हेलो लॉयथर। आज हम स्टार्ट करते हैं पहले हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट और एज यू नो दैट मेरे चैनल का नाम है इंडो जर्मन पाथवे एंड टुडे आई वुड लाइक टू वार्म वेलकम आवर फर्स्ट गेस्ट सुमित। सो सुमित, कुछ अपने बारे में आप बताओ। So thank you Shivam, thank you for this invite. Yeah, short introduction मेरे तरफ से मैं am Sumit Thigala, and one of the universities which I did my masters is from Hochschule Rheinwald University of Applied Sciences. So as you know, applied sciences universities are much more practical, जहाँ पे practical knowledge होता है बहुत सारा, when you can do a lot of work in labs, in actual workplaces or workshops within the university. So I like the applied sciences, and मेरा first two criteria तो fulfill हो रहा था mechanical engineering का, and second was English. सो इस पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि लाइक जर्मनी में मोस्टली यूनिवर्सिटी टू टाइप्स में डिफ्रेंशिएट है। जो आपने बोला अप्लाइड साइंस, इट्स कॉल्ड होक्सचूले, राइट? और दूसरा है टीयू, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। एज यू ऑलरेडी मैंशन, होक्सचूले में हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल बेसिस पे वर्क करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। इवन आई डिड ऑल्सो माई मास्टर्स फ्रॉम होक्सचूले ब्रेमरहाफन। सो हम लोग वहाँ पे ज़्यादातर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें ज़्यादा फोकस रहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वर्क हो। बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देते हैं, बहुत सारा रिसर्च वर्क होता है। आई ऑल्सो डिड लॉट्स ऑफ रिसर्च वर्क इन डिफरेंट हाइड्रोजन फील्ड। एंड वाइल TU में कैसा होता है कि देर आर टू मच फोकस ऑन थियोरेटिकल स्टफ। ओके, ये एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम है, ये डिफ़िकल्ट स्टफ है, वो डिफ़िकल्ट स्टफ है। और मैंने बहुत फ्रेंड्स से सुना हुआ है लाइक TU में रफली अराउंड 2 to 3 years आई वुड से मिनिमम, अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना हो तो फॉर मास्टर्स के लिए। एंड देन सम पीपल ऑल्सो डू 4 to 5 years। आई मीन डिपेंड्स ऑन द पर्सन, हाउ कैन ही able to maintain certain stuff. बट होक्सचूले का मैंने जहाँ पे देखा, लाइक आई डिड माई मास्टर्स विद इन 19 months. सो इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस। इट वॉज रियली वाइज डिसीजन कि आपको होक्सचूले में क्यों जाना है। आई अग्री विथ योर डिसीजन, या एंड जस्ट कंटिन्यू लाइक। I had done just A1 level, और मुझे ये पता था कि अगर मैं पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूँगा तो आई वुड हैव rather hard time getting a pure English speaking job, considering requirements of the Yeah. job market in Germany. बट व्हेन यू गॉट योर एडमिशन एट दैट टाइम, आपने A1 कंप्लीट किया था या Yes. यहाँ आने के बाद A1 कंप्लीट नहीं, किया? मैंने A1 कंप्लीट किया था A1 but in in India. India. Okay, But I so did there not is a get it. requirement of certain language that you need to do while applying in German university. No, at that time, no. At that time, At no. that time for my university, So you just did by yourself. by Okay. myself, yeah. So I wanted to just let's say social integration के लिए मैंने A1 किया था, just to understand some basic words, basic information. But for my university at the time, there was no requirement of language. But बाद में after lot of after 3 semesters, I think जो लोग आए university में, they needed the language requirements. Okay, yeah. But मेरे time पे I did not need it. And how was your visa procedure in back 2015? Yes. So like it was really difficult or you easily get your spot? I mean, because उस टाइम पे इतना ज़्यादा rush नहीं था। I would say अगर हम देखेंगे somewhere around 5 to 10,000 people are coming for masters in Germany compared to now, I guess more than 50,000 students are coming. Yeah. So how was your visa procedure? So first thing is, at the time it was 8,500 euros. तो you have to have a block account. तो पहले तो वहाँ पे Deutsche Bank का block account we used to use it. Yeah, because in 2015 there are not certain facilities are available. Like मेरे time बहुत सारी other institutes available थी, but I guess in 2015 you have only Deutsche Bank, right? Or there are Yes, certain there other. was Kotak Mahindra as well. Yeah, I mean but this is only this kind of bank, but banks. not a third institution. Like हमारे केस में Expetrio थी. Yes. Then I guess there are certain others. I didn't remember the name, but yeah, just continue. I mean, you तो applied उस to टाइम पे the. वो नहीं था, मतलब I mean I cannot, मेरे लिए I was very honest, I was focusing on Deutsche Bank. तो उसके लिए हमको पहले तो अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, then you have to put in the money in that account, then it will be blocked. So that was the first step. Then second step was to get your visa application. At my time when I was applying for visa,
उस टाइम पे कैसा था कि हमें इनिशियली 6 मंथ्स कर देते थे, देन यू नीड टू कम इन जर्मनी एंड देन यू कैन एबल टू एक्सटेंड इट. बट अभी मैं कन्नड़ सिनारियो सुन रहा हूँ, जो अभी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए कैसा है कि दे विल गेट 1 year of visa. Oh, that's Yeah. good. So throughout the 1 year, they don't need to worry about the visa. For example, like if you are a student from metro cities such as Berlin, Frankfurt, और वहाँ पे बहुत hectic रहता है because there are so many immigrants और वहाँ पे waiting period is so much high. So for them, it's a really a beneficial thing when you already get 1 year of visa. Such in my case, like I was doing my study in Bremen, and वहाँ पे इतना ज़्यादा rush नहीं था. So like after I would say 6 months, I got 1 year of visa extension, and then I would say after 1 year I got 2 years of visa extension. Yeah, so it was really a good thing for me. But you have to show money for that, right? No, there is no such a criteria that I need to show some money. So at that time, so it's a different story. Maybe we can come on that point later on during our discussion. But just want to give you a brief introduction about this topic. Is like that. It depends on the basically city. अगर आप बड़ी सिटी में रह रहे हो, वहाँ पे ना कंट्रोलर्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो आपको वीज़ा ज़्यादा मिलता नहीं है. भले आपके पास अकाउंट में 10,000 euro 20,000 euro doesn't matter. I would say 6 months या 1 year का ही मिलता है. But if you are living in a small town where there are not many immigrants, then there is a high probability that you will get your 2 years of visa extension, sometimes 3 years of visa extension. Like in my case, I got 2 years of visa extension, and I just show some 7 to 8,000 euro in my account. But at that time, I was doing my master thesis, and the crazy part is that I got 2 years of visa extension. It was in 2023. So 2023 till end of 2025, ठीक है. और उसके बाद मेरा 2024 beginning of 2024 I got a job. So now that visa is not gonna helpful for me because वो student visa पे मैं रह रहा था. Now I have a blue card. Blue card, yeah. But the interesting fact is that somehow I don't know it was their mistake or not, I don't know, but उन लोगों ने मेरा student card है वो भी delete नहीं किया. So अभी मेरे पास 2 card है. It's a student card जिसका validity till end of 2025 है, और I have also my blue card जिसका validity है end of 2026, right? So No, actually, you're right. but the thing is, like, I'm considering blue card visa as my main visa. That is, I don't know, I mean that is some exceptional case I would say, but the point was कि आप बड़ी सिटी में रह रहे हो तो आपको कम वीजा एक्सटेंशन मिलता है, आप छोटे गांव में रह रहे हो आपको ज़्यादा वीजा एक्सटेंशन मिलता है, rather less No, that's absolutely money हो right. या ना हो आपके That's अकाउंट. doesn't absolutely- matter. What is your lost in translation moment? Because I mean it's a really funny thing because like अगर A1 का भी आपका proficiency है इंडिया में, then still it's not so much good that you can understand everything, right? So what was your lost in translation moment when you came first time in Germany? It was really funny incident. So you're right. मैंने A1 किया था. I Yeah. did not speak that fluent. मुझे सिर्फ normal चीज़ें पता थी. Some Minor stomach pain. तो मैंने उसको बोल रहा था कि मुझे we usually say in India हमारा पेट खराब है तो मुझे डायरिया या फिर लूज मोशन टाइप है कुछ, तो ऐसे बोल के वी गेट अ सिक लीव या फिर वी गेट अ टैबलेट एंड वी गो. तो मैं उसके पास गया. फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मुझे जर्मन नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आता. तो ही वाज ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश. and how about your friend? उसको आती थी? उसको भी नहीं आती. उसको भी नहीं उसके आती. भी नहीं आती. तो एवरीबॉडी वाज लाइक कि Yeah, ये हुआ. तो फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट मिल गई. हम लोग हाफ एन आवर बैठे. मैं डॉक्टर को बोला कि मुझे सिक लीव चाहिए, सिक नोट चाहिए, मेडिकल नोट चाहिए. कि बोला हाँ ओके व्हाट इज हैपनिंग, वास्पस्ती हट करके बोला स्टमक पेन, या फिर मैं उसको बोला कि लूज मोशन. तो उसको समझ में नहीं आ रहा. अल्टीमेटली मुझे, मेरे पास सब मेडिसिन थे इंडिया से लाए हुए, मुझे सिर्फ मेडिकल नोट चाहिए थी. तो आई वाज लाइक उसको 2 बार समझा, 3 बार समझा, तो उसको समझ ही नहीं रहा. तो इमीडिएटली मैंने बोला उसको कॉफ मेडिसिन, मेरा दिमाग खराब हो रहा है. तो मेरा दोस्त मुझे देख रहा है, मुझे बोल रहा है भाई तेरा तो पेट दुख रहा था, अभी सर दुख रहा है. बोला भाई अभी इसको समझाऊंगा, तब तक मेरा पेट दुख रहा था, अभी मेरा सर दुख रहा है इसके समझाते समझाते. If somebody is thinking to stay in Germany, I would say B1 तक तो आना चाहिए, so you can at least able to
convey what happens with you. I mean, when you bring your family here, and if you guys don't speak German, and sometimes certain things happens, right? कि हम बीमार पड़ सकते हैं, तो एटलीस्ट हमें कन्वे करने के लिए कुछ जर्मन आना चाहिए. और सेकंड पॉइंट आई वुड से कि when you come here in Germany ना, the first thing what you need to do is that make a family doctor. Yes. That is really important thing. Why I'm telling you this thing is like I have also some experience on certain things. But आपका अगर फैमिली डॉक्टर होगा ना, तो अगर आपको सिक लीव चाहिए, अगर सिक नोट्स चाहिए, so you just need to go your family doctor और उसको एक्सप्लेन करो. आई मीन ही ऑलरेडी नोज यू, राइट? समटाइम्स अगर मेरा फैमिली डॉक्टर की बात करो, अभी मेरा एक जो फैमिली डॉक्टर है, ही कैन स्पीक रियली गुड इंग्लिश. सो इफ समथिंग हैपन्स विथ मी, तो मैं उसके पास जाता हूँ, हे डॉक्टर बिचू, मेरा ये हाल चल रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, कैन यू जस्ट राइट डाउन मी अ नोट सो आई कैन सबमिट इट टू माई वर्क प्लेस एंड आई कैन टेक अ सिक लीव. और एज ऑलरेडी वो भी मुझे जानता है कि अच्छा आई ऑलरेडी विजिटेड हिज क्लिनिक फॉर ट्वाइस और थ्राइस, राइट? सो ही नोज एंड ही ऑलरेडी अवेयर, अच्छा इसको जर्मन इतनी अच्छी आती नहीं है. सो यू कैन ऑल्सो फाइंड सर्टेन वे टू डील सर्टेन सिचुएशंस. बट आई वुड से फैमिली डॉक्टर इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग. अब जब यहाँ पे आते हो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू? सो आई वुड से सिटी रजिस्ट्रेशन. Yes. Yeah, that is the first thing you need to do. Definitely. Second thing, I would say second thing आपका अपना हेल्थ इंश्योरेंस Yes. का टेक केयर करो. आई गेस इंडिया से लोग अभी करके आते हैं. And in my case, I did initially I opted with the TK, but I came here in Germany and then I changed my health insurance company from TK to Barmer. Okay. So it's also public health insurance, but yeah, it's really good. And then third thing is Steuernummer, tax ID, because The star and number आपको मिलता है already when you do city registration. yeah, that's true. But if you are in rush, then you can also go to your city registration office Yes. and ask directly them for your tax ID number. Otherwise, you need to wait 15 to 20 days, and then by later you will get your tax ID. Apart from it, if you remember any certain things which is necessary to do when you come in Germany. So I think bank account. Bank account, I already mentioned bank account. Yes. And then SIM card is also important Yes, thing. absolutely. Yeah, SIM card, because if you don't have a net, then it's gonna be really trouble for you. Yeah. Apart from it, yeah, I mean these are the mainly things. सबसे important is city registration as well as your visa extension. अगर आपके पास सिर्फ 3 months का वीजा हो, then you have to Yeah, apply I mean, for the visa extension together with the city Yeah, registration. that's true. That's Yeah. true. But nowadays the scenario is हाँ, different, change. so yeah. So I think अभी नहीं है वो. अभी इतना rush नहीं है. Coming to the another question, I mean that's a really important question. So, during your studies, have you ever encountered with some kind of part-time job, or maybe you can tell your struggles? I mean, part-time job भी बहुत difficult रहती है, and sometimes it's you also get night shift or something like that, some endless sleeps and you know some struggles. So, what was your experience on this topic? First part-time job was Amazon. Okay. It was wonderful job. It was the one of the best paid job, part-time job for me at the time. मैंने join किया. I think because of my universities I could not join it in November. वो November 1st December से start किया. And this was also a recommendation from that friend of ours who was here for 1 year before us. और I guess Christmas में आप part time job Amazon में specifically करते हो, तो आपको कुछ bonus मिलता है. It's called Weihnacht bonus, right? Yes, Weihnacht bonus होता है. Then you also get 10%. अभी मुझे पता नहीं. I did it in 2015. Yeah, I know. But at the time we had 10% coupon. मतलब 10% code होता था. If you are there, we can get on every Amazon product we can get 10%. और मेरा job था, there are 2 jobs. So you go to a fulfillment center. तो वहाँ पे picking होता है और packing होता है. Picking means whenever you have a scanner in your hand, it's a big work warehouse. हर कोई चीज़ें हर एक block में होती है. And when you get, for example, you ordered something right now, आपके पास वाला जो fulfillment center उसमें जाएगा वो, it will be redirected to that place, और वो उसके सिस्टम के अराउंड आपको एक स्कैनर में आएगा कि ये मटेरियल चाहिए. देयर इज नो नेम और एनीथिंग, दिस मटेरियल इज रिक्वायर्ड. देन यू पिक अप द कार्टन, वो लेके जाते हो ट्रॉली में, वो जहाँ पे है वो स्कैन करते हो, डालते हो, एंड यू पुट दैट इन. सो दैट इज कॉल्ड पिकिंग. एंड पैकिंग इज समथिंग जो पिकिंग होने के बाद वो कन्वेयर पे रख के
that material goes to that particular workstation और वो स्कैन करके वापस वो कहाँ एड्रेस है वो प्रिंट होता है एंड दैट्स पैकिंग सॉरी मुझे हमारे दोस्त लोग कुछ जिनको चलना नहीं है बिकॉज यू हैव टू walk around 15 to 20 kilometers I mean, it's a a day. hard work job, I would say. So, But, and but apart it's from fun. It's fun. yeah, it's fun, and apart from it, जहाँ तक मैंने सुना है, you need to wake up early in the morning, Yes. right? So there are वो three बहुत shifts. There are three वो shifts. बहुत ज़्यादा stressful रहता है. So morning में somewhere around you need to wake up, I guess 2 to 3, because like again depends on where you are Where you're living living, and yeah. where is your work location, Yes. right? So अगर traveling अगर morning में ही ज़्यादा है, तो आपको रात को 2 बजे उठना भी है, travel भी करना है, you need to reach your work location at least somewhere around 5 a.m. and then you need to start your work till 5, maybe somewhere around 8 to 9 or 10, So I don't the know. shift was 6 to 2 ऐसे और 2 to 10 Yeah. ऐसे थी and the thing is we had shuttle buses at the time and see 2015 में शिवम I don't say this was not a hard work, it was a hard work for every one of us. We were new to the country but the intention was हमें पैसे मिलने वाले थे. When we saw that kind of amount we knew एक महीने में हम लोग को 3,000 euro तक मिलेंगे including everything. Tax भी रिटर्न आएगा क्योंकि we were student and that was and shuttle bus थी and we everybody was 21-22 years old. Yeah. तो ऐसा So, कोई ये नहीं था कि यार बहुत स्ट्रगल हो रहा है. There are a lot of people or lot of friends दोस्त थे यूनिवर्सिटी के, सब लोग जाते थे क्योंकि शटल बस अवेलेबल करी थी इसने अमेजोन में. Yeah. एंड द थिंग इज ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम यू कैन नॉट डू एनीथिंग आउट बिकॉज इट्स ऑलरेडी विंटर, बहुत ठंडी होती है. एंड द थिंग वाज यहाँ पे हम लोग सब मिल के you can get to see a lot of new items as well in Amazon. तो आपको 10% discount होता है and you can buy it directly. So that was my first job. And what was your next job? Next part-time job or maybe? Next part-time job was after Christmas job. After this Amazon, we went for a Spain trip. We spent a lot of money on that. Then we went. My next job was Primark. I was working in Primark to fold shirts, and I mean I was in all the sections, men's section, ladies sections, all. I has to just fold or help to stock the material. And how about you need to talk with the customer? Yes, absolutely. In Amazon, no. In Amazon I did not have any. Yeah, I know. And how about Primark? Primark, yes. Because so they used to ask you the question. But it's minor questions like Yes. where is the washroom Exactly. and Exactly. can I able to find the bigger size or something like that. Yeah. I guess that you can able to manage it, Yes, right? yeah. What was your third job? Or After that, I did a job of newspaper. So I used to. It's a free newspaper, which I mean free for the people around. So newspaper में क्या होता है? You get this pamphlets. बहुत सारे advertisement आते हैं Kaufland के, Edeka के, हर कोई supermarket पे. You put that in the paper and you give it on weekend papers. Or that job was actually the most, let's say, most hectic job I would say. okay. Because वहाँ पे क्या होता था, हमें 200 या 300 पेपर डालने होते हैं and you have your own bicycle, you have that one trolley behind you. Yeah. और मेरे केस में क्या हुआ, I got allotted a place which was a town place. तो अब अगर आप सिटी में हो then you have in one apartment 15 people, your 15 papers are gone, done. You move, there are 10 apartments, 10 papers are gone, done. Yeah, and I guess one challenging thing you forgot to mention that your bicycle was without electrical bicycle, Yes, right? So it that was the one of the main challenging was, part. yeah. But nowadays, I guess companies are preferring like offering electric bicycles, so it's not difficult. But yeah, coming to your point, yeah, it was a really difficult and challenging job. It was really challenging. And how about your next part-time job, or No, you already done with your? I mean, this I want to tell you. I mean, I had one more part-time Okay. job. So first was Amazon, second was Primark, third was this paper job, which was the not worst, but it taught me a lot. It taught me a lot. Yeah, I can understand. And how about your next one? And last job was my Kaufland job. अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें की. I did everything Kaufland. When I say everything, I was sorting the things. I was putting up the stocks. I used to work only 2 or 3 hours a day. Every day 3 hours. I have to also once I have to do the cleaning. Cleaning vehicle पे बैठ के clean करना था.
I've also cleaned the And that's washrooms. really cool. I mean, I've cleaned the वो washrooms as कार well. पे बैठ के ऐसे Yes. तो washroom नहीं वो कार पे वो हाँ clean वही ना फ्लोर क्लीन floor करना है. clean That's वाली okay. vehicle वो Without driving license or with No, driving you don't license? need a driving license for that. You don't need a driving license for that. But that job, I mean, I also cleaned washrooms there, and I was like, it was really bad I scenario. mean, नहीं job. yeah, I would also want to add something on this point. So now I want to give you my part-time job, basically which kind of part-time job I did. So मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फ्लिंक से, which is like delivery, ठीक है. But the thing was, Flink was a startup company when I joined Flink in 2022. Just आई थी अभी नई नई, ठीक है. तो हमारे पास ऑर्डर्स ही नहीं थे, ठीक है. और हम लोग 8-8 घंटे की शिफ्ट लेते थे और 8 घंटे में लिटरली 2 ऑर्डर डिलीवर करने जाते थे. जस्ट 2 ऑर्डर्स, राइट. Just you can imagine, and we are having a good amount of money in our bank, right, without doing anything. तो पूरे 8 घंटे में हम लोग क्या करते थे, एक मोबाइल लेके जाते थे, अच्छे से मूवी डाउनलोड करते थे और मूवी लेके जाते थे, देखते रहो. अच्छा. और हम लोगों ने एक पैटर्न बना के रखा था. सो एट द सेम टाइम देयर आर 8 or 9 डिलीवरी बॉयज, राइट. ठीक है. तो हार्डली 10 मिनट में एक ऑर्डर आता था, ठीक है. तो ऐसा नंबर लगा के रखा था, अच्छा शिवम नाउ इट्स डन, नेक्स्ट इज द सेकंड पर्सन, फॉर एग्जांपल द मैक्स, गाइस मैक्स, राइट. तो सेकंड अगर ऑर्डर आया, मैक्स डिलीवर करने जाएगा, ऐसे में क्रॉस मार्क करते थे और करते थे. 8 घंटे में आई उससे 2 या 3 ऑर्डर मैंने डिलीवर किया. बट द थिंग इज मैंने यहाँ पे 2 या 3 मंथ काम किया. बट एट द एंड एज यू नो दैट ऑर्डर्स थे नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को शट डाउन ही करना पड़ेगा. तो शट डाउन करके वो लोग चले गए. बट द थिंग इज जाते जाते 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी देते गए. सो बाय द लॉ, आई मीन इफ यू आर फायरिंग समवन देन यू नीड टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ मनी. That's true. Then I started my second job. It was also a part-time job in Burger King. Yeah, so I was in Burger King for 3 to 4 months, I would say. No, more than 4 months. Yeah, 6 months somewhere around. और मैं किचन में ही था पूरा, और I was working in morning shift. So मेरे को प्रिपेयर करना था सब कुछ. तो जो भी बर्गर किंग में आप देखते हो, लाइक टोमेटोज कटिंग, ऑनियन कटिंग, डिफरेंट सॉस प्रिपेयर करना, वो सब मेरे अंडर में था. Nice. तो वो किचन का मैं पूरा हैंडल करता था. देन आई वॉन्ट टू चेंज माई जॉब एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, ठीक है. 6 महीने के बाद मैंने जॉब किया मैकडोनल्ड्स में, ठीक है. बट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट इन किचन. मैं आगे आ गया था, कासर पे काउंटर पे आ गया था. सो आई कैन एबल टू इंटरेक्ट विद द पीपल. द रीजन इज दैट आई वांट टू इंप्रूव माय जर्मन लैंग्वेज. दैट्स द ओनली रीजन आई वाज डूइंग पार्ट टाइम जॉब, एंड नॉट फॉर मनी, जस्ट फॉर टू इंप्रूव माय लैंग्वेज. एंड फिर मैं वहाँ पे आया, बहुत कस्टमर से ज़्यादा इंटरेक्शन होने लगा. इट वॉज रियली गुड मोमेंट. एंड या दैट वॉज माई लास्ट पार्ट टाइम जॉब. एंड देन I haven't did any kind of part-time job because after that I got my internship thesis and everything was fine for me. But yeah, that was my story. And why I was telling you this story, because coming to your point that you mentioned that you need to also clean the washrooms and everything. So as a caster, if you're working in caster, then you also need to do the same thing. Like maybe floor मैंने clean किया है, because caster में वही रहता है. Okay, caster का आप handle कर रहे हो, but when you get a night shift ना, तो आपको cleaning भी करना है. And I mean, like, we don't have more people in Germany, right? So, I mean, it's fine. I mean, we don't have a people, so Yeah. you will not gonna find a people who can only clean the floor area and the washrooms and everything. But the important thing is, like, it's your responsibility here. Like, if you are working in castle now, it's your responsibility. You need to clean it. No, that teaches So a lot. as a responsibility, I would say, yeah. I also felt something bad कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, but I mean, it's fine, it's my job, so I'm not taking so much seriously. So because I need to spend only 10 minutes or 15 minutes to clean that stuff, but it's fine. I mean, मैं वही बोलता हूँ कि like मैंने back in India में कभी खुद का घर साफ नहीं किया था, like Actually, that's और यहाँ पे आके मैं खुद सब कर रहा हूँ. So I would say it's really good thing. Even अगर in future भी मैं इंडिया में जाऊँगा permanently रहने के लिए, so these are the habits, right, I'm taken with me. So मैं वहाँ पे भी जाके अभी खुद ही साफ करना हूँ, क्यों किसी पे डिपेंडेंट रहना. So that's the thing which I learned. But yeah, I mean, this is the thing about a part-time job. Apart from it, if you want to add something in this point, No, I guess these are the things. important Yeah. points. I mean, you learn a lot in part-time jobs. Okay.